Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Malik Muhammad Wasim. I am demonstrating biology practical. Today we study the girdles of frog. This is our last part of the series of lecture about the skeleton of frog. So we start our lecture. There are two types of girdles. Number one, pectoral girdle or shoulder girdle. And number two is pelvic girdle. So we start with pectoral girdle. If we talk about the structure of pectoral girdle, we discuss first the sternum. There are four types of sternum which is present in pectoral girdle of frog. इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे. फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करूँगा, बताऊँगा उसके डिफरेंट पार्ट्स, और देन जैसे हम यूजुअली करते हैं उसके बाद आपको फिजिकली उसका डेमोस्ट्रेट करवाऊँगा कि किस तरह से ये पार्ट हमारे स्केलेटन के अंदर मौजूद है. फर्स्ट वी स्टार्ट विद एपिस्टर्नम. एपिस्टर्नम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल. अगर हम इसको चेक करें अपने स्केलेटन में तो दिस इज दिस पार्ट which I marked with this red marker. This is episternum. ये कार्टिलेज का बना होता है. It is made up of cartilage. This is episternum. Epi means above, first part of sternum. Then we move to second part. So this is omosternum. And the omosternum, if we check this in this skeleton part, so this is omosternum, जो ऊपर से स्ट्रेट बोन और नीचे आके बाइफरकेट हो रही है. ओमोस्टर्नम के बाद आफ्टर द ओमोस्टर्नम, अब यहां पे देखें ये दो बीच में दो डिफरेंट बोन्स आ गई हैं, ठीक. और उसके बाद इस गैप के बाद देन अगेन स्टर्नम का जो है पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. अब जो थर्ड हमारे पास स्टर्नम का पार्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड मेटास्टर्नम, और कुछ जगह पर इसको हम मीजोस्टर्नम भी पढ़ते हैं. कुछ जगह पर इसे मेटास्टर्नम बोलते हैं. इन सम बुक्स इट्स डोनेटेड एज मेटास्टर्नम. तो दिस पार्ट इज मेटास्टर्नम. अगर हम यहां पे चेक करें तो यहां पर हमारे पास मेटास्टर्नम कहां पर होगा, वो ये वाला पार्ट. दिस इज अगेन अ बोनी. दिस लाइन इज, दिस बोन इज मेटास्टर्नम. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज ज़ेफिस्टर्नम. एंड दिस ज़ेफिस्टर्नम is also a cartilaginous in nature. It is a cartilage. This is ज़ेफिस्टर्नम. And this is the fourth and last part of sternum. So we have four sternum part. The first one is episternum. This is the episternum. The second is omosternum. This is bony. This is omosternum. Then metasternum. This is metasternum. And last one is ज़ेफिस्टर्नम, which is present here. So these are four parts of sternum. Then we move to other part of pectoral girdle. So the first part is clavicle bone. This is clavicle, which is horizontally placed. If we talk about the
clavicle of human being, it's also a horizontal bone. And this clavicle is the only bone in human beings which is horizontally placed, but not in frogs, because another bone which is also horizontally placed but parallel to clavicle is coracoid, which is thicker than clavicle bone, and these two are parallel to each other. So, if we check this clavicle in our skeleton, then this bone here, this bone is clavicle bone. You check this bone, जो horizontally placed bone है, इसे हम बोलते हैं clavicle bone, जो कि thin bone है. और उसके एग्जैक्टली नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक थिक बोन होगी, उसे हम बोलते हैं कोराकोइड बोन. सो थिकर वन इज कोराकोइड एंड थिनर वन इज क्लेविकल. और इसकी बेस पर आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंटीरियर एंड ऑफ पेक्टोरल गर्डल कौन सा है और पोस्टीरियर एंड ऑफ पेक्टोरल गर्डल कौन सा है. नंबर 1, उसमें हम क्या देख सकते हैं, जहां पर क्लेविकल बोन क्या है, वो थिन है, तो हम थिन बोन को अपर एंड पर रखेंगे जस्ट लाइक दैट, और थिक बोन को लोअर एंड पर रखेंगे, तो हमारा ये जो हम स्केलेटन पकड़ा हो मैंने पेक्टोरल गर्डल, ये अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा. आप बोलेंगे दिस इज इंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर एंड. इसके बाद जो आपको बोन मिलेगी, जो पार्ट मिलेगा, वो है हमारे पास स्कैपुला. ये एक बोनी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. दिस इज स्कैपुला. दिस इज स्कैपुला. इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं. स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं. ब्लेड मीन्स चिपटा हुआ, विच इज फ्लैट फ्रॉम बोथ एंड्स. अगर हम इसको इसमें देखें स्केलेटन में, तो ये हमारे पास दिस पार्ट इज स्कैपुला. दिस बोन इज स्कैपुला. स्कैपुला के अगर हम इंटीरियर एंड की तरफ देखें, दिस इज द इंटीरियर एंड ऑफ स्कैपुला. हियर आपको यहां पर एक रिज नजर आएगी, एक प्रोट्रूजन नजर आएगी, और वो प्रोट्रूजन क्या कहलाती है, एक्रोमियन प्रोसेस. एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस. दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस. अब एक्रो मीन्स टिप. द पॉइंटेड एंड ऑफ द स्कैपुला is called acromion process. This is again the part of scapula. And the opposite end of this acromion process, the posterior end of the scapula, a cavity is present. And this cavity is called glenoid cavity. This glenoid cavity, if we check from this is a glenoid cavity which makes a joint with humerus of forelimb with the proximal end of humerus of forelimb of frog. So this is a glenoid cavity. This is another point through which we can differentiate between the anterior and posterior end of the pectoral girdle. Where cavity is present, the cavity is always present on the posterior end of pectoral girdle. So this is a second point through which we differentiate the anterior and posterior end of the pectoral girdle.
And third point is the acromion process. This is another point through which we can differentiate the anterior and posterior end of the pectoral girdle. So we can differentiate on the basis of 3 points: the pectoral girdle, the anterior and posterior view of pectoral girdle. The number 1 point is clavicle bone. This clavicle bone is thinner than the coracoid. This is the first point through which we can differentiate between the anterior and posterior view of pectoral girdle. The second one is the glenoid cavity, which is always present on posterior side of the pectoral girdle, which is always on the posterior side of the pectoral girdle. And the last point is acromion process, which is present always on the anterior end of the scapula. So, through these points, 3 points, we can easily differentiate the anterior and posterior view of pectoral girdle. And the last point is the suprascapula. This is a flap of cartilage. So, we discussed the ventral view of pectoral girdle. This is the ventral view of pectoral girdle. So, these suprascapula are present on the dorsal side of the pectoral girdle. They are clear. Now, this shaded area is a suprascapula. These 2 flaps covers the frog from the back end and makes a virtual or vestigial type, you can say that virtual a rib cage or a chest cavity, not a rib cage, which protect the main organs of the body like heart and lungs of the frog. So, if we talk about the suprascapula in human beings, it is present in the form of suprascapular process, and this is suprascapular process is present on the top of scapula of human being. It is a ridge like structure which provide the attachment side of the muscle. So, it is not the part of the skeleton. It is just, it's not a bone, it's just a ridge and a part of this main scapular bone which is present in a human being. As well as a coracoid bone which is present in frog, but in human beings it is a hook like bone structure, hook like ridge, like a coracoid process, just like coracoid process. So, in human beings it is a coracoid process, not a coracoid bone. So, these 2 bones which are present in frog, one is bony, another is a cartilaginous structure, while in human beings it is a bony, but it is a ridge like structure, hook like structure, coracoid process, and a suprascapular process for the attachment of muscles to enhance the strength of binding of the muscles. So, we move to the next view of pectoral girdle. For that, we should move to the next board to study that the dorsal view of pectoral girdle of frog. So, we discuss the dorsal view of pectoral girdle, which is just like the ventral view of pectoral girdle of frog. Here we differentiate between the dorsal and ventral view of frog. If we see from this end, in which you see that the portion of sternum and clavicle and coracoid are clear cut, and
the suprascapula is present behind this whole part of pectoral girdle. So this side is ventral side, because sternum is always present on the front side of body and our front side of body is ventral side. If we see from this from back end, here the scapula is present in front of you and other parts behind of you, then this is the dorsal side, the dorsal view of pectoral girdle. Here you see that all the parts are present and the names like episternum, omosternum, then metasternum and zephysternum, as we discuss all in previous one. Then this is clavicle bone and this is epicoracoid, जो हमें सामने से बहुत एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा था, इसने बैक से पूरा कवर किया हुआ है अगर हम इसकी डॉर्सल साइड से देखें. और देन हमारे पास ये जो आ रहा है, दिस इज कोराकोइड बोन, दिस इज एपिकोराकोइड एंड दिस इज कोराकोइड. और उसके बाद देन अगेन हमारे पास स्कैपुला और उसके इंटीरियर एंड के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस, देन ग्लीनॉइड कैविटी और उसके बाद सुप्रा स्कैपुला. So this is all about the pectoral girdle of frog. Now we move to next board for studying the pelvic girdle of frog. So we discuss the last part of skeleton of frog, the pelvic girdle. In this lecture, we discuss the two views of pelvic girdle of frog. First is dorsal view and second one is lateral view. So, if we talk about the dorsal view of pelvic girdle of frog, here we see that this is the articular facet for 9th vertebra. अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात की थी तो उसमें हमने जो 9th वर्टिब्रा था, जिसे हम सैक्रल वर्टिब्रा बोलते हैं फ्रॉग में, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस थे, साइड्स पर 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस थे और उन ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमने उनके जो एंड्स थे वहां पे हमने बात की थी कि ये आर्टिकुलर फेसेट बनाते हैं फॉर 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग ऑफ पेल्विक गर्डल. तो उसमें जो मैंने बात की थी कि पेल्विक गर्डल की, कि वहां पर ये इसमें आर्टिकुलेशन होती है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर वो जो दोनों जो हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस आके अटैच होते हैं. जस्ट लाइक दिस एंड, ये 2 फिंगर्स को देखें, ये दोनों फिंगर्स अगर इसको इस तरह से हम पॉइंट करते हैं दिस एंड पर, तो ये just like transverse process, this part is like vertebra, centrum of vertebra, ये उसके 2 transverse process आ गए और ये यहाँ पर इस तरह से लाइक करते हैं. और जो सेंट्रम है वो ये मार्कर अगर आप देखें तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा. अगर इसके हम कैप ले लें, दिस इज यूरोस्टाइल, ये यूरोस्टाइल आ गया. ठीक, ये जो मेरे पास इसका कैप है और ये 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गए और पीछे हाथ जो है ये वर्टिब्रा. तो इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है. तो अगर इसको हम देखें अपने इस पार्ट में स्केलेटन में, तो हमारे पास ये टिप्स, अगर आप इसको यहां से देखें, ये हमारे टिप्स जो हैं वो क्या हैं, ये आर्टिकुलर फेसेट फॉर 9th वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड सैक्रल वर्टिब्रा. तो यहां पर वो ज्वाइंट फॉर्मेशन हो जाएगी. देन उसके बाद देखें आपके पास एक लॉन्ग बोन मिल रही है आपको, जस्ट लाइक यूरोस्टाइल बोन. ये जो ब्लैक मैंने शेड किया हुआ है, अगर हम यहां पे देखें तो ये वाली बोन जो है दिस, ये जो ब्लैक लाइनिंग में आपको ये वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज इलियम.
लॉन्ग बोन है, दिस इज कॉल्ड इलियम। और अगर यहां से आपको दिखाऊं तो दिस इज इलियम, पेयर की फॉर्म में है। और पेयर देखना है तो आप इस एंड से देखें, एक ये बोन इलियम और सेकंड वन इज दिस, दीज टू आर इलियम बोन्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। इनके डॉर्सल साइड पर आपको एक कार्टिलेज का बना हुआ अगेन एक फ्लैप सा नजर आएगा, एक रिज नजर आ रही है। और उस रिज को हम जो बोलते हैं, दिस जो कार्टिलेज की बनी रिज है उसका नाम है इलियम से इलियक क्रस्ट। दिस इज, ये जो ब्लू कलर में शेड हुआ यहां पर, दिस इज इलियक क्रस्ट। अब इलियम और इलियक क्रस्ट के बाद अगेन आपके पास देखें, अगर आप इसकी आप डॉर्सल साइड से इसको देखें तो यहां पर हमें एक ये टिप नजर आ रही है जो कि ज्यादा क्लियर होगी अगर हम इसको दूसरे एंड से, वेंटर एंड से आपको मैं शो करूं। दिस टिप, दिस इज द आर्टिकुलर facet of for urostyle, this is articular facet for urostyle। तो यूरोस्टाइल क्या, अटैचमेंट की ये साइट होगी, जो कि अगर हम डॉर्सल व्यू जो है हमारे पास ये वाला होता है जिसमें आपके पास इलियक क्रस्ट फ्रंट पे आएगी, देन उसके बैक पर आपके पास इलियम है और उसके बाद ये आपके पास आर्टिकुलर जो है वो फेसेट आ गया फॉर यूरोस्टाइल। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास अगेन एक कैविटी है। इस कैविटी को अगर यहां पे शो करें तो ये साइड्स, बिकॉज अगर आप इस एंड से देखें तो आपको ये कैविटी क्लियर नजर नहीं आती, जस्ट एक उसके एजेस नजर आते हैं। इस कैविटी को देखने के लिए हमें इसके लेटर व्यू की तरफ जाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट अगर हम यहां से इसको शो करें, दिस इज कैविटी विच इज कॉल्ड एसीटैबुलम। इस कैविटी का नाम क्या है, एसीटैबुलम, जो कि अगर इस व्यू से आपको दिखाऊं, दिस इज क्लियर व्यू, दिस इज एसीटैबुलम। ये एसीटैबुलम कैविटी फीमर ऑफ द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फीमर ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग के साथ ये ज्वाइंट बनाएगी। ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसका हेड होगा एंड बॉल एंड सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे ज्वाइंट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज एसीटैबुलम। इस कैविटी के बारे में हम देखें तो ये बहुत क्लियर कट हो जाएगी लेटरल व्यू की तरफ जाएं हम। अगर हम लेटरल व्यू की तरफ जाएं तो यहां आप देख रहे हैं हमारे पास ये इसका साइड व्यू है और ये साइड व्यू, दिस इज लेटरल व्यू। यहां से हमें ये क्लियर कट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास कैविटी एसीटैबुलम है ये 3 डिफरेंट बोन से मिलकर बनी हुई है। द फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम इलियम, ये हमारे पास इलियम बोन आ रही है और ये उसकी कंट्रीब्यूशन है, दिस इज इलियम, दिस इज होल पार्ट इज इलियम। सेकेंड हमारे पास प्यूबिस आ जाएगी और जो लास्ट वन है हमारे पास ईशियम आ जाएगी। दिस इज ईशियम, दिस इज इलियम एंड दिस इज प्यूबिस। ये तीनों मिलकर एसीटैबुलम की फॉर्मेशन करती हैं। और यहां पे अगर हम लेटर व्यू में देखें तो हमारे पास एक क्लियर जो है एसीटैबुलम नजर आ रही है। ओके, अब जो सेकंड लास्ट हमारे पास इसमें जो पार्ट है वो है ईशियम। ईशियम बोन जो है अगर हम इसको डॉर्सल व्यू से दिखाना चाहें तो दिस इज ईशियम, दिस इज ईशियम। ये जो टिप आपको नजर आ रही है ये ईशियम बोन की है जो कि लोअर एंड ऑफ एसीटैबुलम आपको मिलेगी, दिस इज ईशियम। अगर हम इसके लेटर व्यू की तरफ जाएं तो लेटर व्यू में ये क्लियर हो जाएगी, दिस इज ईशियम, दिस इज ईशियम, जो कि किसकी तरफ है, इलियक क्रस्ट की तरफ है। इलियक क्रस्ट की तरफ आपको ईशियम मिलेगी और उसके ऑपोजिट एंड इलियम की तरफ आपको प्यूबिस बोन मिलेगी। तो प्यूबिस
कहाँ होगी? इलियम की तरफ, और इलियर क्रस्ट की तो हमें ईशियम बोन मिलेगी। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर के बाद इन गर्डल्स के बारे में काफ़ी नाव होगी। दिस इज ऑल अबाउट द पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग, एंड आई होप सो कि इससे आपको काफ़ी नाव होगी इन गर्डल्स के बारे में। और दिस इज ऑल अबाउट द whole skeleton of frog. So with next practicals of bio, we will meet in next lectures. So till Allah Hafiz.